Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I'm back again with my another I tried following makeup tutorial, and this time I tried my most favorite Shreya Jain. Yes, she is so talented guys, and she is such an inspiration for me. और मैंने उनको देखकर काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सीखी हैं. So I don't know मैंने ये लुक कैसा किया है, कैसा लगेगा सब लोगों को, but let's see कि मैंने ये इस लुक को कैसे अचीव किया है. So without any ado, let's jump into my video and let's get started. So guys, first of all, I am using this Freedom Oil Free Base Lotion as a moisturizer, and after that I am applying my lip balm from Ted Baker. And मेरे पास सारे वो products नहीं है जो श्रेया ने यूज़ किए हैं, but मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनके जैसा लुक अचीव कर पाऊँ. सो फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग माई कीको मिलानो अनलिमिटेड फाउंडेशन, एंड दिस इज़ सो गुड. दिस गिव्स मी फुल कवरेज एंड आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन. एंड मैंने सेम बिल्कुल वैसे ही फाउंडेशन अप्लाई किया है जैसा श्रेया करती हैं. और आफ्टर दैट मैं इसको अपने पफिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. और अपने ब्रश के ऊपर मैंने 1-2 ड्रॉप्स डाली हैं अपनी ब्यूटी ऑयल की, बिकॉज माई स्किन इज़ रियली ड्राई, दैट्स वाई. एंड अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से. एंड देन टू सेट माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर, और उसकी हेल्प से मैं अपना पूरा फाउंडेशन को सेट कर लूँगी. यू नो फ्रेंड्स, मैं श्रेया की वीडियोस जब से देख रही हूँ, जब वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पुरानी थी, एंड मैं स्टार्टिंग से उनकी वीडियोस को देखते आ रही हूँ. एंड शी इज़ सच अ डार्लिंग. Okay, so for concealer I'm using my LA Pro Girl concealer because I don't have NARS one, because Shreya has used NARS concealer, but I'm using my LA Pro Girl concealer, and I am applying this underneath my eyes in a triangular shape, and I'm applying some concealer on bridge of my nose, some on my forehead, some on my cupid bows, and some on my chin, and then I'm going to blend each and everything nicely. एंड फ्रेंड्स, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग इन श्रेयाज वीडियो कि वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर को आगे की तरफ से इस तरीके से पकड़ती है एंड देन सारी चीज़ों को ब्लेंड करती है. एंड यू नो गाइस, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है. मैंने इस टेक्निक को बिल्कुल सेम यूज़ करके और ब्लेंड करने की कोशिश करी, और इतनी अच्छी तरीके से मेरा कंसीलर ब्लेंड हो गया. सो गाइस, आप भी इस टेक्निक को अपनाएं और फिर देखें जादू. In this video, Shreya has used Victoria's Banana Loose Powder, but I don't have that one. So I am using my collection loose powder, and I am applying this loose powder underneath my eyes. And जहाँ पर भी मुझे sweating problem होती है, मैं वहाँ पर ये loose powder लगा रही हूँ. And then कुछ सेकंड के बाद मैं इसको अपने powder brush की हेल्प से रिमूव कर दूँगी. श्रेया ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने 5 काउंट्स करा और उसके बाद उन्होंने अपना लूज़ पाउडर सेट करना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया है. और सेम मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, बट मैंने एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपना जो पाउडर है वो मैंने सेट किया है. For contouring I'm using my Freedom Contour Palette, एंड मैंने ये वाला शेड अपने कॉन्टोर के लिए चूज़ किया है. एंड श्रेया ने भी अपनी वीडियो में कुछ इसी टाइप का कॉन्टोर शेड चूज़ किया था. And to sculpt my face, I'm applying my contour on my jawline also, because Shreya ने भी कुछ इसी तरीके से अपना contour किया था. That's why. For blush, I'm using my Bourjois blush in shade peach, a peach kind of pink shade. बिकॉज श्रेया ने जो ब्लश यूज़ किया था वो भी कुछ इसी तरीके का था. मेरे पास वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. नाउ आई एम अप्लाइंग माई हाईलाइटर, एंड आई एम यूजिंग माई स्लीक हाईलाइटर पैलेट, एंड आई एम अप्लाइंग माई हाईलाइटर ऑन highest point of my cheeks, some on my bridge of my nose, tip of my nose, cupid bow, chin, and my forehead. For my eyebrow, I'm using my Anastasia Beverly Hills Dip Pomade in shade Ash Brown, and मैं बस अपने eyebrows को shape दूंगी एक अच्छी सी. That's it. For my eye makeup, I'm going to use my Makeup Revolution Iconic Eyeshadow Palette,
and I am choosing this brown shade because Shreya has chosen this means same kind of color from PAC eyeshadow palette, but I don't have that one, so that's why I'm using this palette. And I am applying this shade on my crease area, means upper crease area, as my transition color. And then I'm applying this shade on my crease area as my second transition color from the same eye palette. And I am blending this color really well because I don't want any harsh line. And then I'm choosing this shimmery shade from my Makeup Academy eye palette, and I'm applying this shade on my eyelids just like Shreya did. And I am blending this shade with my transition shade so that koi bhi harsh line na rahe. And then I'm applying that same brown shadow on my lower lash line, और मैं उसको भी अच्छे से blend कर लूँगी. And then I'm applying my kajal, and this is from Maybelline, on my waterline. For liner, I am using my Maybelline Studio Gel Liner, and I'm applying this liner on my lash line. And I'm going to blend this kajal really well because Shreya ने थोड़ा सा smudge kajal यहाँ पर लगाया है because she did Indian Baddie Instagram look. And then I'm using my Maybelline Colossal Mascara, and I'm applying this mascara on my lower lash line and upper lash line as well. For my lip color, I am using my Makeup Academy lip color, and this is in shade brown. And then Shreya ने ombre lipstick लगाई थी, और उसके लिए उन्होंने second lipstick का भी यूज़ किया था जो कि पहली वाली lip shade से एक shade light था. So I am applying that same tone of lipstick on my lips. And for my setting spray, I am using this Makeup Academy setting spray, and ये बहुत ही hydrating setting spray है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. So guys, this is my final look, and I hope you really enjoyed it, and I hope कि मैं श्रेया जैन के मेकअप लुक से थोड़ा बहुत भी मैच कर पाई हूँ. So Shreya, this is for you, and I really love you, and you are awesome. So guys, if you like my video, then please give a thumbs up, and if you have any question, then you can comment below on my comment section. And if you haven't subscribed my channel guys, then please do subscribe my channel. Share this video with all your friends and family. Now मिलते हैं मेरी next video में. Till then, take care, bye bye.